Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So ajiro video re ame gote question solve kariba and this question is from mechanics branch. The question kon deichi na a bullet of mass m, small m, moving with a velocity v naught hits a wooden plank of mass capital M placed on a smooth horizontal surface. The length of the plank is L. And the bullet experiences a constant resistive force F inside the block. So the minimum value of V naught such that it is able to just come out of the plank is dash. So there are four options and you have to choose the right one. The question कौन देइछि ना गोटे स्मूथ सरफेस ऊपर गोटे प्लांक अच्छी जार मास होची कैपिटल एम एंड आमे गोटे बुलेट को फायर करूचे से बुलेट रो मास केते स्मॉल एम and it is fired with a velocity of v naught. Okay, so there is no friction between the surface and the plank because it is a smooth surface or frictionless surface. So when the bullet will hit the plank, then it will penetrate inside it and the question ko pacharchi what should be the minimum value of v naught ta mane minimum kete speed re ame bullet ko fire kale kon habo na that bullet will be able to just come out of the plank. Our plank भितरे bullet गोटे resistive force experience करिवो. When the bullet will move inside the plank, it will experience a resistive force because there will be friction between the bullet and the plank. ठीक अछि. So आमे देखिबा जे v naught रो minimum value केते हबा दरकार so that it will be able to just come out of the plank. ता माने L distance cover करिवो आउ ए साइड रे कोन हबो से just प्लांक को क्रॉस करके आसिक तले पड़ी जीवो. सो ए क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई आमे अप्लाई करिया को कांसेप्ट ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो फर्स्ट आमे देखिबा जे जते बडे बुलेट आसे कि प्लांक रे हिट करिवो सेते कोन हबो. सो इनिशियली द प्लांक वाज एट रेस्ट, द बुलेट वाज मूविंग. सो द मोमेंटम ऑफ द बुलेट केतला तार मास इनटू तार वेलोसिटी. So the momentum of the bullet माने आमे कहिबा pi राहुची m into v naught. Small m होची mass of the bullet, v naught is the initial velocity of the bullet. So when the bullet will hit the plank and it is given that the surface is smooth surface, it is frictionless. तबे कोन हबो जते बडे बुलेट आसिकी प्लांक रे हिट करिवो at that time कोन हबो बुलेट आउ प्लांक दुहे मिसी की गोटे कॉमन वेलोसिटी रे मूव करिवे. जेहेतु एटा गोटे स्मूथ सरफेस अछि तो डेफिनेटली प्लांक भी मूव करिवो. तो हमको देखिबार अछि व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द प्लांक एंड बुलेट सिस्टम. सपोज v is the common velocity of the plank and the bullet. तो फाइनल मोमेंटम केते हे जिवो the combined mass माने mass of the plank which is capital M plus mass of the bullet small m and suppose they will move with a common velocity v. तो हम जदि मोमेंटम कंजर्व करिबा तो आमे लिखि परिबा जे pi equal to pf. जदि हमें pi equal to pf पुट करिबा आमे पाइ जिबा m v naught is equal to capital M plus small m into v. So the common velocity v केते हे जिवो m v naught divided by capital M plus small m. So this is the common velocity with which the plank and the bullet will start moving. ठीक अछि. तो next हमें कौन देखिबा we will conserve the energy. So initially this bullet has kinetic energy half the mass of the bullet m small m into v naught square. So जते बळे बुलेट जे कि हिट करिबा प्लांक को तर एनर्जी जो स्पेंड हबो इन टू वेज. कौन ना हमें जानिछे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, द इनिशियल काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ द बुलेट एटा केते होची हाफ m into v naught square and this kinetic energy will be spent in two ways. कौन ना जते बड़े बुलेटा मूव करूची थ्रू द प्लांक इट इज एक्सपीरियंसिंग ए रेजिस्टिव फोर्स f. ता माने प्लांक भितरे मूव करिया पाई दैट बुलेट हैज टू डू वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स. रेजिस्टिव फोर्स f कहि देछि एंड द लेंथ ऑफ द प्लांक l कहिछि. तो f रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करिवो और l डिस्टेंस ट्रैवल करिवो. सो द वर्क डन बाय द बुलेट टू मूव अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स विल बी fl. ठीक अछि.
तो एफ एल कौन एफ एल हूँ वर्क डन एगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स वर्क डन एगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स. Next part कौन ना when the bullet will hit the plank then the bullet and the plank system they will move with a common velocity v. तो माने the kinetic energy of the bullet plank system केते आसीबो kinetic energy of bullet and plank system सेटा केते हबो हाफ इनटू द कंबाइंड मास जोटा होची कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू कॉमन वेलोसिटी स्क्वायर इनटू v स्क्वायर. तो एटा केते हिजबो हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन प्लेस ऑफ v आई कैन पुट दिस वैल्यू. तो v रो स्क्वायर केते हिजबो m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल m प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर. तो एटा कैंसिल हिजबो वी गेट m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर divided by 2 into capital M plus small m. So the initial kinetic energy of the bullet is spent in two ways. The first one is the work done against the resistive force. The value is FL and the rest part appears as the kinetic energy of the bullet and plank system. The value is m square v naught square by 2 into capital M plus small m. Now we can find that what is the minimum velocity v naught. तब आम कौन करवा वी विल कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी. तमाने द टोटल एनर्जी बिफोर द बुलेट हिट्स द प्लांक इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर द बुलेट हिट्स द प्लांक. तमें कौन लिखा ये हाफ एम v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एल प्लस दिस वैल्यू m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m. सो ये m v नॉट स्क्वायर केते हबो सब में 2 मल्टीप्लाई कर देबा इज 2fl प्लस m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाय m प्लस स्मॉल m. ओके सो दैट इम्प्लाइज एबे देखो एठे में यदि m को डिवाइड कर देबा सो v नॉट स्क्वायर केते हिजबो 2fl divided by m plus m v naught square by capital M plus small m. Okay. So next step हमें कौन करिबा just simplify कर देले हमें आराम से आंसर पाई जिबा. So take this term to left side. मैं पाइबा एठी v naught square minus this value माने m v naught square by capital M plus small m that is equal to 2fl divided by small m. Okay. So if I take v naught square common हमें कौन पाइबा 1 minus small m by capital M plus small m that equal to 2fl divided by m. So v naught square into LCM केते जीवो LCM will be capital M plus small m. So ako multiply करियो 1 रे तो small m plus m minus m कटि जीवो we get m by capital M plus small m equal to 2fl divided by small m. ठीक है. So एबे v naught square केते आसीबो multiply this term on this side ako divide कर देबा तो केते हबो 2fl into capital M plus small m divided by capital M. So what is v naught? Square root of this quantity. So if you look at the options then sorry it would small m thila. Okay, it is small m right rahibo and this m will be divided here. So if you look at the option then option B will be the correct one. 2fl capital M plus small m divided by capital M into small m. So this should be the minimum velocity of the bullet so that the bullet will be just able to cross the plank and it will exit on this side. So in this way you can solve this question.